grade 7 students. Now we are going to deal with your literature readers unit number 7, the invention of Vita Wong. Okay, and this story, a short story which is written by Mr. Roald Dahl. Okay, now before you read section, who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? Why these questions have been asked related to very old thing, very old people. Okay, have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? कभी आपने सोचा है कि आप जल्दी से जल्दी बड़े बूढ़े हो जाओ, जल्दी से जल्दी ग्रो होना चालू हो जाओ, like your grandpa and grandma? आप उनके जैसे बड़े होना चाहते हो? कभी आपके दिमाग में ये आया कि मैं बड़ा हो जाऊँ? I know some of you might be thinking, no, never. हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं. Some of you might be thinking, yeah, I have wished once and like that or that. I never. But if you ask me, I never thought to be growing up early because I want to live in the current situation. How the moments are coming, I love to enjoy them. Okay, so I never make a hurry like this. Okay, now the title of the story is The Invention of Vita Wong. क्या है ये वीटा वोंग? किसने किया इन्वेंशन इसका? चलो ढूंढ के निकालते हैं. The invention of Vita Wong. Please keep your finger off the first line of the story and please keep it on when I am reading and explaining you. Okay? Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka Vitae, which makes people younger. So who's the scientist over here? The scientist is Mr. Willy Wonka. What invention he did? What invention was there? The name of his invention was Wonka Vitae. उन्होंने एक ड्रग बनाया, एक मेडिसिन बनाया या फिर एक मिक्सचर बनाया, उसका नाम था Wonka Vitae. Okay, according to him, when a person drinks a few drops of that medicine or drug, made people younger. क्या होता था? 2-3 ड्रॉप भी आप ले लो तो आप यंग हो जाओगे. बूढ़े लोग लेंगे तो वो यंग हो जाएंगे, राइट? सो ही नेम्ड इट Wonka Vitae. वोंका इसलिए क्योंकि वो उनका सरनेम था तो वीटे रख दिया आगे, Wonka Vitae. बट Wonka Vitae इज़ टू स्ट्रॉन्ग. बहुत स्ट्रॉन्ग बना था वो. सो सम पीपल डिसअपियर. लिटरली जिन लोगों ने लिया उनमें से कुछ लोग गायब हो गए. अपने बर्थ से पहले के ज़माने में चले गए, कहाँ थे पता नहीं, लेकिन गायब हो गए. एंड बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. उनकी एज माइनस में चली गई जब उन्होंने थोड़ा सा चखा तो. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक बंदा तो -87 एज का हो गया, मीन्स गायब होके -87 में चला गया. That means he has got to wait 87 years before he can come back. उसको 87 years wait करना पड़ेगा, तब जाके वो पैदा होगा और फिर आगे जाके वो अपनी असल ज़िंदगी में आएगा. So that was Wonka Vitae. Okay, so Mr. Willy Wonka must invent a new thing. So he got upset. वो upset हो गए कि ये इतना strong बन गया. Now he started thinking he should invent something else. कुछ अलग करना चाहिए. So Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brains searching for the new recipe. I had to create age to make people older, oldest. Ha ha ha, I cried. For now the ideas were beginning to come. So the next drug or the medicine he was thinking to invent was a drug which could make the people older. पहले बनाया लोगों को यंग बनाने के लिए, अब अगला वो बना रहे थे लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए. Okay, so he started thinking, what is the oldest living thing in the world? सबसे old living thing क्या है इस दुनिया में? What lives longer than anything else? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत सालों तक रहती है दुनिया में, जिंदा, मरती नहीं है? A tree, Charlie said. Who was Charlie? Charlie was one of his volunteer. assistant. Charlie एक assistant था
मिस्टर विली वोंका का, तो उसने एक बताया अ ट्री. राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलेस फर, नॉट द ओक, नॉट द cedar. No, 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 my boy. It is a tree called the Bristol cone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find the Bristol cone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. And look that word up in the dictionary when you get home, will you please? ये आपके लिए है. ये जो word है ना dendrochronologist, आपको क्या करना है? You have to find the meaning of this word in the dictionary. अभी घर जाने को मैं नहीं बोल सकती because already you people are at home. So what you have to do, you have to find the meaning of this word और comment box में मुझे उसका meaning आपको बताना है. Okay? I am not going to tell you the meaning of this word. You are going to find it and you are going to comment in the comment box the meaning of this word. Okay, so that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. So what kind of tree according to Mr. Willy Wonka lives for 4,000 years? 4,000 सालों तक वो ट्री जिंदा रहता है. कौन सा ट्री? Which tree? Bristol cone pine. Where Charlie would find that tree? Charlie would find that tree on the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA. USA में वो ट्री मिलेगा. So and then he started, Mr. Willy Wonka started to think what more things he should bring which are older. Okay, तो वो मिक्सचर बनाने के लिए, वो ड्रग बनाने के लिए. सो ही जम्प्ड इनटू द ग्लास एलिवेटर लिफ्ट में वो बैठ गए और पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने काटा ढूंढते हुए कि क्या क्या पुराना है. एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग दोज थिंग्स. सो लेट अस फाइंड आउट विच थिंग्स ही कलेक्टेड. अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन. पिंट ऑफ सैप मीन्स थोड़ा सा टुकड़ा उस पेड़ का उन्होंने लिया, which the Bristol cone pine, which was 4,000 year old. Then the toenail clipping from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich. Petrovich Grigorovich नाम का एक रशियन फार्मर है, उसके टो का नेल, उसकी पैर की उंगली के नाखून का टुकड़ा वो उन्होंने कलेक्ट किया. The farmer was 168 years old. An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. 200 साल बूढ़े हो चुके टॉर्टोइज ने जो अंडा दिया था वो अंडा वो लेके आया. The tail of a 51-year-old horse in Arabia. One Arabian horse which was 51 year old, उसके टेल का एक बाल उन्होंने ले लिया. The whiskers of a 36-year-old cat called Crumpet. Crumpet नाम की एक बिल्ली है जो 36-year-old की है, उसकी whisker, उसकी एक मूंछ उन्होंने ले ली. An old flea which had lived on crumpets for 36-year-old. एक 36-year-old की flea means जो a kind of insect which sucks the blood of animals. flea होती है ना, तो वो भी 36-year-old की flea है. उसका क्या ले लिया? हाँ, उसको पूरा ही ले लिया, उस flea को पूरा ले लिया. Then the tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. एक टिबेट का रैट है जो 207-year-old का है, उसकी टेल ले ली. The black teeth of a 97-year-old Grimalkin living in a cave on Mount Popocatepetl. Black teeth ले लिया इस जानवर का जो रहता है केव में, that is 97-year-old. The knuckle bones of a 700-year-old Catalu from Peru. पेरू में रहने वाला जो ये Catalu है जो 700-year-old का है, उसका knuckle bone ले लिया. Okay, now he had collected all those things all over the world. Charlie, Mr. Wonka went on. This sentence is said by Mr. Wonka कि पूरी दुनिया में घूमा मैं Charlie. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the shrock, the polyfrog, the giant
curlic, the stinging slug, and the venomous squircle who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. इनका भी कुछ ना कुछ उन्होंने ले लिया. But there's no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. So what he told to Charlie, that further he mixed all those things in his inventing room and he boiled these things in a mixture, bubbled them, he mixed them and he was ready to test it. टेस्ट करने के लिए रेडी. इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बॉईल करके सिर्फ एक कप फुल वो मेडिसिन, वो ड्रग बन गया. एंड वन ऑफ हिज वॉलंटियर, ब्रेव वॉलंटियर, उसका नाम था उम्पा लुम्पा, वो रेडी हो गया वो टेस्ट करने के लिए कि भैया देखते ये बूढ़ा होता है कि नहीं. सो what did happen? चार्ली asked. चार्ली बहुत उत्सुक हो चुका था सुनने के लिए कि फिर क्या हुआ. उसने वो चखा. It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off. His teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonk invented. So, ये जो वॉलंटियर है उम्पा लुम्पा, ही वॉज 20 years old. ही गॉट रेडी टू चेक द ड्रग. सो जस्ट ही swallowed it and he became 75-year-old man, है ना. So this was a successful drug he had invented, and Mr. Willy Wonka, he named this drug Vita Wonk. वीटा वोंक लोगों को ओल्ड बनाता है और वोंका वीटे लोगों को यंग बनाता है. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. एंड दिस इज़ हाउ मिस्टर वोंका वाज सक्सेसफुल इन इन्वेंटिंग अ ड्रग विच मेड पीपल ओल्ड. ओके, सो this was a whole story all about see children, see it's just a fun part कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, we don't know, but this is the fact, or I should say it's not good to go against the nature or the law of the nature. निसर्ग के या पर्यावरण के आप नियमों के अगेंस्ट नहीं जा सकते. निसर्ग ने जो नियम बनाए हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है वो यंग होगा, वो ओल्ड होगा और वो मर जाएगा, आप उसको बदल नहीं सकते हो. अगर आप बदलना चाहोगे तो पूरा जो इकोसिस्टम है सब बिगड़ जाएगा. इसलिए भगवान ने तो बनाया है ना, एक साइकिल दूसरे से रिलेटेड है. ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. अगर एक भी इसमें से डिस्टर्ब हो गया, सोचो इंसान अगर बंदा मरे ही ना तो कितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, लाइफ साइकिल चलेगी नहीं आगे, सिर्फ इंसान पैदा होते जाएंगे लेकिन मरेंगे ही नहीं. सो इट शुड नॉट बी डन. वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द नेचर. इट्स नॉट गुड एक्चुअली. सो टेक दिस लेसन एज अ फन पार्ट. एक फन पार्ट की तरह लो, समझो और छोड़ दो. इससे कुछ सीख नहीं मिलती. सीख इतनी ही मिलती है दैट वी शुड नॉट गो अगेंस्ट दी नेचर. नेचर के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है. Okay children, so I have given you the question answers of this lesson. Please copy them down neatly, correctly in your notebook, and please send me the clear images of it. Okay, till then, bye.